थैंक यू जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ message is today date is 13 July 2021 and message is coming from Luke 5:4. Luke chapter 5 verses 4. ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਯਿਸੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। Jesus said ਕਿ ਸ਼ਮੌਨ come on, go to deep water and put the nets. This is the message today, and how can relate it with this? I just give you conclusion. Lesson 4, God's plan. Lesson 4, God's plan for your life always involve risk. Always involve risk. This is the message today. Why? Because he wants you to live by faith. Why do you think Jesus said to Peter, launch out into the deep? Because there was a big fish. Or most people live out their days in their shallow waters of life. They exist on a superficial level. There's little depth to their lives. They count to play around the edge, never getting out into deeper waters. Why? Never getting out into deeper water. Why? Because it's safer shallow waters. They think if I get out into the deep water, there might be some waves. They might rock my boat and it might overturn. So I will just stay back where there is a comfortable and fiddle around. We barely get your feet wet because we are afraid to getting in our heads. We think if I really get serious about my commitment to the Lord, he will make a fantastic. My family might get really upset. What will my friends think? What if God asked me to do something I am unable to do? So we are not content to stay in the shallows, and we miss you out of so much. Understand this: God's plan for your life is a God plan. One we will work your benefit. See Jeremiah chapter 29 verses 11. See Jeremiah chapter 29 verses 11. Jeremiah. Now conclusion is coming. Conclusion is coming. Listen proper, very carefully, and this is the very deep message for everyone, for special Nigeria, because one, your sister she's in trouble in Nigeria, and later on I discuss with him. 29:11 ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੜਕ ਦੀ ਆਸ ਦਵਾਵਾਂ। ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਮੈਸੇਜ। Jeremiah told, I know your thinkings. Jesus said, the word of God said, I knows your thinkings, and I am thought. I know who you are. God said, I want to give the peace, not dirty things, no good things. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜ, because I encourage unnecessary. It is a message say by Jeremiah, the Holy Spirit, and Jeremiah write it. And understand? Now, second one, he says, let me get into your boat, let my presence be with you. Whatever you go in your business, in your career, in your family, in your marriage, in your area, let me direct you. Cooperate with my plan, and I will bless you beyond the wildest dream. Beyond the wildest dream. Why not take him up his word today and launch in the faith? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Every day this message speaking with me, and biblical message this one, and we want to, our thinking is coming from the peace of Prince, not any other else. ਆਓ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਨਾ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਨਾ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮਦਰ ਸੁਹਾਈ, रब की होवे मदर सहाय, उसके नाम की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होए सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसके हमद की सना, उसके घर में उसके हमद की सना, होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में वो कैसा है कादिर, कामों में वो कैसा है कादिर, उसके कुदरत चला, उसकी कुदरत बता, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, ओए रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सना। जय 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 कर जोर से फूको नरसिंहे, जय कर जोर से फूको नरसिंहे, बदवत बीन बजा, बदवत बीन बजा, रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सना। तारदार सजो अग्नि छेड़ो, भाग्यराज साजो पर अग्नि छेड़ो, उर्फुर तबला बजा, उर्फुर तबला बजा, रब की होवे सना हमेशा,
रब की होवे सलाम, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुरे सुरी सरीली, बांसुरी पर रब की होवे सदा सदा, बांसुरी पर सुरें सरीली, रानी होवे सना, बांसुरी पर सुर सुरे नरीली, झन 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 झांझ बजा, झन 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 झांझ बजा। ओए रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताड़ी बजाओ, सारे मिलकर ताड़ी बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना, रब की होए सना हमेशा, रब की सना। Thank you, Jesus. Father, Lord, today I pray special. One of our church lady, very loving lady, she is stuck in Nigeria due to overstay. She is born in America, very kind, very religious woman. All world pray where my voice come. And Nigeria government overstayed plenty, $7,500 they asking, but she have no money and she is stuck. Day and night she prayed, where my voice come, anybody come to help and serve this lady. I do not want to see her cries, and my Jesus don't want to see her cries. Please, if anybody help me to, I give you number. And she is stuck because Jesus told me you help her because she is our big pillar of the Christ. Because Jesus, also I want to start today with pray humbleness. Father, God, help him, help her, open her ways, she go her house and live peacefully life. Father, I pray for her, open her way, open her way, open her way, free of cost, Father. She go her home, America, California, Father, because she is waiting, she is innocent. Father, listen my prayer and do the work in the name of Lord my Jesus Christ. Amen, Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. हे मेरे बाप, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी मर्जी जो आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। आज के दिन की हमें रोटी दो, जैसे पिता परमेश्वर आपने हमें माफ़ किया है हम भी एक दूसरे को माफ़ करने वाले बने। बुराई से बचाओ, परतावे में न पड़ने दो, क्योंकि सदा सदा के लिए महिमा शक्ति राज्य आपके हैं। मांगता हूँ प्यारे बेटे सुंदर यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।